Okay, how is preparation different for 95, 95, 99.9? Is the process of preparation and यार ये बहुत लंबा हो जाएगा आंसर, बट 95 एंड 99.99 दोनों की प्रेपरेशन में बहुत ज्यादा फर्क होता है. बिकॉज अगर आप 95 तक चलते हो, कुछ बेसिक लेवल करके आप चल सकते हो, यू नो, प्रॉब्ली गेटिंग 5 क्वेश्चंस इन क्वांट्स और प्रॉब्ली गेटिंग, यू नो, 1.5 सेट इन DLR एंड गेटिंग 10 क्वेश्चंस इन वर्बल. बट फॉर 99.90 प्लस you have to face monster which is that third RC from reading from verbal. 2 RC निकल जाते हैं, थर्ड RC वो नाक में दम कर देगा आपके, वो जान ले लेगा. फोर्थ RC तो भाई वो तो अलग लेवल पे. So you'll have to face them, right? That's where things get difficult. Now understand this. एक बच्चा जो बोलता है मैं 12 क्वेश्चन करके आऊंगा 40 मिनट में, और एक बोलता है मैं 20 करूंगा 40 मिनट में, तो 12 वाले के पास समय ज्यादा है, 20 वाले के पास समय कम है. तो 20 वाला will have to, you know, speed it up. उतना उसकी मेहनत पहले होनी चाहिए, उतना उसको क्लिक होना चाहिए, चमकना चाहिए, स्पीड आना चाहिए, वो एक मास्टरी होनी चाहिए. DLR के बारे में बात करेंगे, थर्ड सेट निकालो या फोर्थ सेट निकालो. क्वांट्स के बारे में बात करेंगे, 12 क्वेश्चन तो बनने चाहिए, उसके ऊपर बात करो टू गेट दैट 99.90. सो whenever you get for 99.90, you will have to face and solve a lot of difficult questions. So it's just not about difficult questions. Getting mentally ready for it. कि मुझे difficult questions solve करने पड़ेंगे. फिर that is number 1. Number 2, you know, you got to put a lot of efforts on your mocks. Write 50, 60, 70 odd mocks. Analyze them. A single mock, like when you begin, you know, one mock should take around about 3 hours to analyze. There's a lot of investment. There's a lot of time that needs to be given. There's a lot of emotional involvement, physical involvement, right? Because your target is 99.90 and still nobody can guarantee that you will get 99.99 because DE day pe, you have to control your emotions.